A very good evening to the student of class 6th. How are you? I hope you all will be very much fine. So today we will do chapter number 13 and name of the chapter is Remembering Chadar Trek by Arun Bhatt. So this chapter is actually a blog by Arun Bhatt. Now question arises, what is blog? It's a regular record of one's thoughts, opinions, experiences that one puts on the internet for other people to read. It is like conversation with the community which is not approachable, means where one cannot read. People can comment on it. So suppose if you have traveled somewhere and you write about your experiences, that what you have seen over there, when you have gone over there, how have you gone over there. So you write about your experiences of that place. So that is called a blog. When you share your feelings, experiences, your opinions with someone else, it is called blog. So it's a very good thing, it's a very good idea, because you cannot reach everywhere, you cannot approach every community, but writing a blog, you can share your experience with the people to whom you don't know even, जिनको आप जानते भी नहीं उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, and those people can comment on your blog and they respond to your blog also. So this is also a blog, the chapter that you are going to read. See this picture, actually this is the real picture. So Arun Bhatt has posted this picture on the blog. So what he has written, that was about 7 years ago that I walked on the now well-known Chadar Trek, a fascinating means attractive walk on the ice sheet of Janskar in winter month. We walked for nearly 2 weeks, crossing over from Indus Valley to habitation in Janskar region. So in this blog he has written about his experience about the Chadar Trek, that he has described the beauty of the place, that the place is covered with ice only, means there was a snowfall. So how many weeks? 2 weeks he has taken to cross that region. So now in this blog he is also telling us that I have been told, have seen explosion of people trying to get on Chadar. It has come with its share of environmental consequences, such as porter cutting away the last of the trees for firewood and too much human activity degrading the ice surface. तो इसमें वो he is actually expressing his concern over human activity around hilly areas. Hilly areas में जैसे लोग people बहुत enjoy करते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग करते हैं, एडवेंचर के लिए जाते हैं, but actually they leave so many things over there, like bottles of cold drinks, plastic, trash. They fill the place with the so many filthy things. इतने ब्यूटीफुल प्लेस को ऐसे गंदा कर देते हैं. तो ही इज एक्सप्रेसिंग हिज कंसर्न ओवर दैट ह्यूमन एक्टिविटी, कि दीज पीपल इन स्पाइट ऑफ ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट इन द प्लेस, दे एक्चुअली डिग्रेडिंग द प्लेस, मतलब उस प्लेस को डिग्रेड कर रहे हैं. So now in these lines what he's saying, being one of the early visitors to the area and having written about it, talked about it in many forms, I have perhaps had my contribution to popularizing the region as well. तो इसमें वो बताते हैं that I have written about this place, about its beauty, about its people, culture, tradition, about the places that I have visited. It is only because of me that this place has become so much popular. उनका ऐसा मानना है कि मैंने इस प्लेस के ट्रेडिशन, कल्चर, रीजन के बारे में लोगों को बताया ब्लॉग लिख के. दैट इज़ वाई लोगों ने यहाँ पे आना जो है शुरू किया, बिकॉज इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मी दिस प्लेस हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर. नाउ कम टू द सेकेंड ब्लॉग है नोमैडिक शेपर्ड ऑफ द हाई हिमालयस. नोमैडिक पीपल किसको बोलते हैं? पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर अ लिविंग, means they don't earn anything. At an altitude of 40,000 to 70,000 feet in the western part of Ladakh lives a community of semi-nomadic herders that have lived a self-sustained life for millenniums. Millenniums mean 1,000 years.
डिस्पाइट द न्यू फाउंड कनेक्टिविटी विद द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इस ब्लॉग में हमने लिखा है कि ऐसी भी कम्युनिटी है जो मॉडर्न वर्ल्ड में आ सकती है, दे कैन इंजॉय द अर्बन लाइफ बट स्टिल दे हैव चूजन टू लिव देयर लाइफ एज इट इज़। फिर भी मॉडर्न लाइफ चाहे है, अर्बन लाइफ चाहे है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपनी ही लाइफ में जो है कंफर्ट फील करते हैं जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ऐसी कम्युनिटी से भी वो मिलते हैं। तो इनका क्या नाम है, जंगपा नोमैड्स, हैपेंड अ डेकेड अगो। डेकेड अगो मीन्स 10 years. When I spotted their Rebo traditional yak wool tents at a distance on the long road from Manali to Leh. They had pitched tents on the famous Moreh plains far away from the road that made them look like black spots in the landscape. But smoke rising from the cow dung stoves revealed what they are. Ab now Arun Bhatt was traveling to that place and he met with the Jangpa community, Jangpa nomads people, and what he has seen that some टेंट हैज़ बीन पिच्ड कि कोई टेंट है यहाँ पे और वहाँ से स्मेल किसी की आ रही है, काऊ डंग जो हम स्टोव्स में डालते हैं, अंगीठी में डालते हैं आग जलाने के लिए, उसकी स्मेल है। तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे कोई रह रहा है। और जब वो वहाँ जाते हैं तो उनको क्या पता चलता है, डेट पीपल आर लिविंग हेयर -25-6 डिग्री टेम्परेचर की, इतने कम टेम्परेचर में -20, आपको पता है -25 इट्स वेरी, बहुत ज़्यादा इतना ठंड होगी वहाँ पे कि इतने ठंड में भी वो सर्वाइव कर रहे हैं लोग। तो अब देखो, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वंडर इन वन ऑफ देयर सेटलमेंट इन अ प्लेस ऑफ स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी। The land they had chosen was carpeted with lush green grass on a kind of soft ground where you relish working barefoot. अब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि ये जो पीपल हैं, nomadic people of high Himalayas, they can live good life, they can live urban life, they can live like us also, like we enjoy the life, but they are happy with their natural हैबिटेशन। जो उनका नेचुरल है हैबिटेशन, उनको उसी से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको उसी तरीके से जीना पसंद है। तो इसमें बताया कि इन विच हाउसेस दे आर लिविंग, कैसे हाउसेस हैं उनके, एंड कैसे वो खाना बनाते हैं, अबाउट देयर कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस ब्लॉग। तो ये सब उन्होंने इसमें बताया है। देन डिस्पाइट बीइंग एक्सपोज टू द वे ऑफ लाइफ nearly decade now, I continue to amaze by their resilience to the harsh weather and tough terrain living. तो जो अरुण भट्ट है, he is very much surprised that how can they live in such an atmosphere. वो अर्बन लाइफ में जा सकते हैं, they can afford that, but still they are happy with their natural habitation. So this is all about the 2 blog by अरुण भट्ट। तो आप भी ऐसे ब्लॉग लिख सकते हो। सपोज इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड समवेयर, यू कैन राइट अबाउट दैट ब्लॉग कि आप कब गए, आपने वहाँ पे क्या देखा, बट हैव यू experienced over there, what kind of people over there, their culture, their tradition. You can write that blog, you can share that blog with everyone, you can share that blog with your friends also. So it's a new trend. First we used to write a diary, हम डायरी में अपने इंसिडेंट्स लिखते थे, तो अब क्या न्यू ट्रेंड आ गया है, ब्लॉग। I hope you must have enjoyed this video. Thank you so much and have a nice day.